Good morning, dear students. I hope you are healthy and safe and you're enjoying your studies. Okay, so we are continuing the same chapter, that is chapter 21, Neural Control and Coordination. Now today we'll be talking about the sense organs. In the last video we have talked about the human eyes. What are the various components of the human eyes and what is the mechanism of vision? How do we see the objects? Now in today's video we'll be talking about the second component, that is human ear. Okay, human ear is also referred to as a statoacoustic organ. Basically this organ performs two functions. One, it helps in hearing the sound, and secondly it helps in balancing. And that is why we are able to walk properly on two legs. So it is responsible for the hearing and the balancing of the body, or the maintenance of balance of the body. Okay. Now if we talk about the various components, various parts of the human ear is basically made up of three parts: the external ear, middle ear and the inner ear. Now look at the picture, dear students. This particular portion is referred to as the outer ear. This is your middle ear and this is your inner ear. So we can divide the human ear into three parts: outer, middle and the inner ear. Right? Now your external ear, if you look at the external ear is made up of pinna. This is your pinna. And the auditory canal, this particular canal which is referred to as auditory canal. So this particular portion is referred to as external ear. So external ear is made up of two main parts, the pinna and the ear canal. Now at the opening of the ear canal, some hairs are seen at this portion where your auditory canal, it gets connected with the tympanic membrane. Okay. And at this particular portion there are certain hairs which are seen, and the ear canal also contains certain sebaceous gland or cereminous glands. These cereminous glands secrete a wax that is also referred to as ceremin. These hairs and wax, they prevent the entry of foreign objects like insects. Right? They prevent the entry of foreign objects like the insects into your ears. So whenever any insect enters into ears, it gets trapped inside this wax. So that those insects, they get trapped into the wax and they die. So they cannot enter your middle ear. So external ear, it prevents the entry of foreign objects as well, foreign materials as well as your insects into your middle ear. Along with this, as your ear canal ends, it ends into a tympanic membrane. As I said, this tympanic membrane is also called as the eardrum. So pinna will open into the auditory canal. So pinna leads to the auditory canal, and auditory canal then leads to your tympanic membrane or the eardrum. Okay, eardrum. Now it is a semi-transparent membrane. This eardrum basically is composed of a semi-transparent membrane, and which is covered by a thin layer of skin on its outer surface, and it is covered by mucous membrane on the inner side. तो आपकी जो tympanic membrane है या जो आपका eardrum है, ये सेमी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होता है. इसके बाहर की तरफ आपकी स्किन का फोल्ड है और अंदर की तरफ म्यूकस मेम्ब्रेन है. Now after this, see your pinna, that is this particular portion is your pinna, then is your auditory canal, and then is your eardrum. As it finishes, then it starts with your middle ear. आपके eardrum के just बाद आपका middle ear start होता है. So this particular portion is referred to as external ear. Now in the middle ear, basically middle ear consists of your tympanic cavity and ear ossicles. Middle ear में आपका tympanic membrane है और 3 bones हैं. There are 3 small bones which are present in the middle ear. The tympanic cavity, it is filled with the air. It's an air-filled space, and this air-filled space, it separates your external ear and your inner ear. ये middle space है जो आपके inner ear को आपके external ear से separate करती है. Now auditory canals जो है, it connects your middle ear to the pharynx. अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक auditory canal है. Okay, if you look at this, there is an auditory canal
This auditory canal, this auditory tube which is referred to as auditory canal, it leads to your pharynx. Okay, and it maintains an equal pressure on either side of the eardrum. और ये जो auditory canal है, इसकी वजह से आपके eardrum के दोनों side pressure equal maintain होता है. Eardrum के this side and that side. So equal pressure is maintained on the both sides of the eardrum. Now in the middle ear, as I told you, if you look at this, the middle ear, this is your middle ear. So middle ear basically is composed of 3 bones: stapes, incus and malleus. Okay, the 3 bones are stapes, malleus and incus. Clear? These are the 3 bones which are present in the middle ear. Okay, so there are 3 bones. Okay, in each ear there are 3 bones, so there are total 6 bones in both the ears. And your malleus, this malleus attached to your tympanic membrane or the eardrum. ठीक है, स्टेप्स आपकी सबसे छोटी बोन होती है बॉडी की. Stapes is the smallest bone of your body. Okay, everyone. So malleus is connected to the eardrum, then incus and the stapes, and stapes is the smallest bone of the body, and this stapes is connected with your oval window. और जो आपकी stapes है ये आपकी oval window से connected है. Oval window is the part of the inner ear. ठीक है, oval जो ear है आपका, oval window जो है वो inner ear का part है. So in the middle ear there are 3 bones: stapes, incus and malleus. Malleus is connected with the ear canal or the eardrum. Stapes is connected with the oval window, and stapes is the smallest bone in your ear. Now in the inner ear is basically made up of bony labyrinth and the membranous labyrinth. तो 2 parts हैं, एक है bony labyrinth and दूसरा है आपका membranous labyrinth. So if you look at this, this is your membranous labyrinth, and this particular part is your bony labyrinth. Clear? This bony labyrinth, it is made up of semi-lunar valves. Clear? So जो आपकी bony labyrinth है उसमें semi-lunar valves present होती हैं. Clear? And it is filled with a fluid which is called perilymph. और इसके अंदर आपका एक lymph present होता है जिसको हम कहते हैं perilymph. And the membranous lymph, as I was talking about, the membranous lymph is made up of 2 parts, the cochlea and the vestibular apparatus. अब इसके अंदर आपके 2 parts हैं. एक है आपका cochlea, this circular part which is, this is called as cochlea. Okay, this is the circular part is referred to as a cochlea, and the second part is called the vestibular apparatus. Okay, what do we call this apparatus? Vestibular apparatus. What do we call it? It is called as vestibular apparatus. Clear? So membranous labyrinth जो है आपकी 2 parts हैं, cochlea and the vestibular apparatus. Then coming to the inner ear, the first part, cochlea. We'll be talking about the cochlea. Cochlea के अंदर आपकी 3 canals present है. There are 3 canals, the coiled canals. ठीक है, cochlea में आपके 3 canals हैं जो coiled हैं. The uppermost is called the scala vestibuli. This uppermost portion is called your scala vestibuli. The middle one is called as the scala media, and the lowermost is called the scala tympani. Okay, now if you just look at this, we can have a simpler diagram. Clear? The uppermost is called scala vestibuli, middle is called the scala media, and third is called scala tympani. Now this vestibuli and media, okay, this vestibuli and media, if you look at this, देखिए बहुत ध्यान से देखिए, vestibuli और media के बीच में एक separation है. This particular portion that is separate. These two, they are separated from each other by Resoner's membrane. So scala vestibuli and scala media, they are separate from each other by Resoner's membrane, while the scala media and scala tympani, they are separate from each other by basilar membrane. So दोनों के बीच में basilar membrane है. ठीक समझ आ रहा है आपको? Okay. So 3 जो आपका cochlea है, cochlea is basically made up of 3 canals. Uppermost is scala vestibuli, then scala media, and the third is scala tympani. Okay, and these 2, they are separated from each other by Resoner's membrane. This particular membrane is called Resoner's membrane. देखिए ये जो membrane है ये आपकी Resoner's membrane है. ये जो membrane है ये आपकी, what do we call it as?
बैसिलर मेम्ब्रेन। ठीक है, सेम आप यहाँ भी देख सकते हैं इस डायग्राम में, बैसिलर मेम्ब्रेन। क्लियर? अब जो आपका वेस्टिबुलाई एंड टिम्पेनाई है, वेस्टिबुलाई एंड टिम्पेनाई, जस्ट लुक इनटू डायग्राम। वेस्टिबुलाई ये है आपका, टिम्पेनाई ये है। बोथ ऑफ देम दे आर फिल्ड विद अ फ्लूइड विच इज कॉल्ड, द फ्लूइड इज कॉल्ड एज पेरिलिम्फ। दोनों के अंदर पेरिलिम्फ मौजूद है, जबकि आपका जो मीडिया है दैट इज फिल्ड विद एंडोलिम्फ। यहाँ पर आपका एंडोलिम्फ है। ठीक है, लेट्स यूज अ डिफरेंट कलर सो दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड। और यहाँ पर this particular portion they are filled with a fluid which is called perilymph. So 3 coils हैं, vestibuli, media and tympani. वेस्टिबुला और टिम्पेनाई में जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको हम पेरिलिम्फ कहते हैं, मीडिया में जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको हम एंडोलिम्फ कहते हैं। वेस्टिबुला और मीडिया के बीच में जो मेम्ब्रेन है उसको हम रेजोनेंस मेम्ब्रेन कहते हैं, एंड स्केला मीडिया और टिम्पेनाई के बीच में जो मेम्ब्रेन है उसको हम बैसिलर मेम्ब्रेन कहते हैं। क्लियर एवरीवन? ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पोर्शन। नाउ बैसिलर, ऑन द बैसिलर मेम्ब्रेन, देखिए बैसिलर मेम्ब्रेन कहाँ पर है, ये आपकी बैसिलर मेम्ब्रेन, दिस इज योर बैसिलर मेम्ब्रेन। सो ये बैसिलर मेम्ब्रेन है आपकी। बैसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है, बैसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर, ना बैसिलर मेम्ब्रेन है, बैसिलर मेम्ब्रेन के जस्ट ऊपर। ठीक है, इफ यू लुक इनटू, ध्यान से देखिए, बैसिलर मेम्ब्रेन के जस्ट ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन ऑर्गन है दैट इज कॉल्ड दी ऑर्गन ऑफ कॉटाई। व्हाट डू वी कॉल दिस ऑर्गन? ऑर्गन ऑफ कॉटाई। समझ आ रहा है आपको? सो बैसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर ये जो ग्रीन पोर्शन है, let's have another, दोबारा से देखते हैं एक बार। If you look into it, there's a structure present. So on the basilar membrane, ठीक है, there is an organ which is projecting into the media. That is scala medium. Scala media में एक organ projected है, and that organ is referred to as organ of Corti. Okay. So just above the basilar membrane, there is an organ present that is lying into the media, scala medium, and that organ is called the organ of Corti. Now इस organ of Corti में जो है आपके sensory hair cells मौजूद है. Okay, sensory hair cells, and these sensory hair cells, they project upward and they lie in contact with the membrane which is called tectorial membrane. ठीक है, यहाँ से कुछ cells project होते हैं like this. These cells, they are projecting upward and they are connected with a membrane which is called the tectorial membrane. ठीक है, again I am repeating, basilar membrane है. Basilar membrane means मीडिया और टिम्पेनाई के बीच में एक membrane present है. Let's again do it. So ये आपका this cavity is called your tympani and this cavity is called your media. दोनों के बीच में ये जो मेम्ब्रेन है, सेंट्रल मेम्ब्रेन है, इसको हम कहते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन. बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर एक ऑर्गन प्रेजेंट है जिसको हम कहते हैं ऑर्गन ऑफ कॉटाई. ऑर्गन कॉटाई में कुछ सेंसरी हेयर सेल्स हैं. वो सेंसरी हेयर सेल्स जो है वो एक मेम्ब्रेन के कॉन्टैक्ट में है एंड दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज टेक्टोरियल मेम्ब्रेन. Now coming to the second part of the inner ear, that is called vestibular or apparatus. तो एक तो आपका कॉक्लिया प्रेजेंट है. ठीक है, कॉक्लिया में आपके 3 सेमिलूनर यू कैन से वाल्व्स प्रेजेंट है, राइट? स्केला मीडिया, टिम्पेनाई, राइट? स्केला वेस्टिबुलाई. नाउ सेकेंड ऑर्गन इज योर वेस्टिबुलर apparatus. What do we call this organ? वेस्टिबुलर apparatus. Now वेस्टिबुलर apparatus के अंदर भी 3 सेमिलूनर वेल्स प्रेजेंट है. 3 सेमिलूनर कैनाल्स आर प्रेजेंट in the vestibular apparatus also. Okay, आपको बात समझ आ रही है? Right. So it is also made up of 3 semilunar valves. Now 2 semilunar valves, they are vertical. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 semilunar valves हैं जो vertical हैं और एक horizontal है. Now so 3 canals, these are anterior canal, lateral canal and the posterior canal. So आपकी 3 semilunar canals हैं, anterior, lateral and posterior canal.
2 are horizontal, sorry 2 are vertical and 1 is horizontal. ठीक है, अब ये आपके कैनाल्स हो गई. कैनाल्स का जो एक एंड है वो बल्जिंग है एंड इट फॉर्म्स एन एम्पुला. देखिए ये जो एंड है हर एक, एवरी कैनाल हैज़ वन एंड, वन जो एक एंड है वो प्रोजेक्टिंग है एंड दैट फॉर्म्स ए एम्पुला. ठीक है, देयर इज एन एम्पुला. क्लियर? और एम्पुला जो है, दिस इज प्रोजेक्टिंग पार्ट ऑफ ईच कैनाल, द बल्जिंग पार्ट ऑफ द ईच कैनाल इज कॉल्ड एम्पुला. और इनसाइड इट इज अ लंप कॉल्ड क्रिस्टा एम्पुलारिस. एम्पुला के अंदर एक लंप है मास का विच इज कॉल्ड क्रिस्टा एम्पुलारिस. क्लियर? And there are long cilia, long cells, there are long cilia of those cells, they are concentrated at a place that is called cupula. So ampulla है, जो bulging head है उसे हम ampulla कहते हैं. ampulla के अंदर, ठीक है, कुछ cells हैं जिनके cilia projecting है, that are called cupula. Now just again you can have a look. So this is your vestibular apparatus. This is your cupula. Another view of the cupula. ये आपका cupula है. ये आपके hair cells हैं. दिख रहा है आपको? These are your hair cells. So bundle of hair cells they are projecting into the cupula. So कुछ cells हैं जो ampulla के अंदर bulge हो रहे हैं. So there are several hair cells. As I told you that the hair cells they are projecting into, there are bundles of hair cells they are projecting into the cupula. Clear? Now your vestibular apparatus basically consists of an otolith organ. इसके अंदर आपका एक otolith organ भी होता है. So first what, that it is made up of 3 semilunar valves and second is it is made up of otolith. Okay, clear? समझ आ रहा है आपको? Second part जो है वो otolith organ है. अब जो otolith organ है, इस otolith organ में 2 चीज़ें हैं. One is utricle and second is saccule. Let's see if you can look into it. This is utricle and saccule. Okay. Clear है सबको? ये जो part है आपका, this particular part, it is referred to as your otolith organ. And every otolith organ has 2 parts. One is utricle and second is saccule. ओके और ये जो सेमिल्यूनर वाल्व्स हैं आपकी, एवरी सेमिल्यूनर वाल्व इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सो हर सेमिल्यूनर वाल्व जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. ठीक है, एंड दे आर सस्पेंडेड इनटू द पेरीलिम्फ ऑफ द बोनी कैनाल्स. बोनी कैनाल्स के पेरीलिम्फ में ये सस्पेंडेड है, इसीलिए इनका जो बेस है वो स्वोलन है. ओके, इसका जो बेस है वो इसीलिए स्वोलन है बिकॉज दे आर सस्पेंडेड into the perilymph of the body canals. Okay, any doubt dear students? Have you understood? Okay, so we know that inner ear is made up of the cochlea and second is your vestibular apparatus. So vestibular apparatus में फिर से आपकी seminal valves है और एक otolith organ है. Now coming to the next part. Now utricle and saccule they have a projecting ridge over the macula. जो आपके 2 parts हैं that is your utricle and saccule. अभी हमने बात की कि हमारा otolith organ जो है उसमें 2 parts होते हैं, utricle and saccule. Now your utricle and saccule, okay, your utricle and saccule they have a projecting ridge. उनके पास एक प्रोजेक्टिंग रिज होती है जिसको हम कहते हैं मैक्यूला. क्लियर? व्हाट डू वी कॉल इट एज? वी कॉल इट एज ए मैक्यूला. व्हाट डू वी कॉल इट एज? मैक्यूला. ओके, एंड दिस मैक्यूला, द क्रिस्टे एंड मैक्यूला दे आर द स्पेसिफिक रिसेप्टर्स विच कंटेन सेंसरी हेयर सेल्स. तो ये आपके सेंसरी हेयर सेल्स हैं जो आप पिक्चर में देख सकते हैं. इफ़ यू लुक एट दिस देयर आर स्पेसिफिक सेंसरी सेल्स. तो ये जो स्पेसिफिक सेंसरी सेल्स हैं ये आपके क्रिस्टा और मैक्यूला में प्रेजेंट होते हैं. कहाँ प्रेजेंट होते हैं? योर क्रिस्टा एंड दी मैक्यूला. एज यू कैन सी दीज सेल्स, द रिसेप्टर सेल्स, दीज आर ओनली प्रेजेंट इन दी क्रिस्टा एंड मैक्यूला.
एंड दीज सेल्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इक्विलिब्रियम एंड पोस्चर ऑफ द बॉडी. और ये सेल्स हैं जो हमारे इक्विलिब्रियम और पोस्चर के लिए मेंटेन होते हैं. सपोज अगर हम सीधे इफ यू आर स्टैंडिंग हेड अपराइट, ठीक है, तो इस तरीके का हमारे हेयर्स अपराइट होते हैं, राइट. दिस ऑटोलिथ मेम्ब्रेन वो इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होती है. और जब हम बेंड होते हैं, सो दिस इज हाउ दीज सेल्स दे आर डिस्प्लेस, दे आर बेंडिंग. तो आपका जो ईयर है वो हमारा इक्विलिब्रियम और पोस्चर को मेंटेन करता है, राइट. इफ़ यू आर स्टैंडिंग स्ट्रेट, इफ़ यू आर बेंडिंग, देन एवरी सिचुएशन द इक्विलिब्रियम ऑफ दिस लिक्विड इज मेंटेन इनसाइड आवर बॉडी. नाउ कमिंग टू द मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग. अब हमें सुनाई कैसे देता है? तो सबसे पहले क्या होता है कि पिन्ना, दिस इज योर पिन्ना विच इज योर एक्सटर्नल ईयर. सो योर पिन्ना विल कलेक्ट द साउंड वेव्स. ओके, दीज आर द साउंड वेव्स. नाउ दीज साउंड वेव्स दे विल पास थ्रू योर ऑडिटरी कैनाल एंड दे विल फॉल ऑन योर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. तो ये आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है. पिन्ना साउंड को कलेक्ट करता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ऊपर वो साउंड फॉल करता है. सो दैट साउंड कलेक्टेड बाय द एक्सटर्नल ईयर is passed through the auditory canal and that sound falls on the tympanic membrane. Now in the tympanic, as the sound falls on tympanic membrane, the tympanic membrane, this membrane will start vibrating. ये जो membrane है ये आपकी vibrate होना शुरू हो जाएगी. This membrane will start vibrating. Okay, as this membrane starts vibrating, right, these membranes will start vibrating. So जो middle ear में आपकी 3 bones है, the ear bones in the middle ear, they will amplify this sound. That is your malleus, incus and the stapes. They will amplify this sound. Amplify means they will increase the intensity of this sound. Now then this sound will pass through your हाँ जी, कहाँ से पास होगा फिर ये आप साउंड जो है आपका कॉक्लिया में पहुँचेगा. Okay, now so you can say the ear ossicles, फिर oval window, then in the perilymph of the vestibular canal, then vibration will reach the scala tympani, then they will pass to the basilar membrane and the sensory hair cells will start vibrating. इसकी वजह से आपकी टेक्टोरियल मेम्ब्रेन वाइब्रेट होगी, फिर आपकी ऑडिटरी नर्व वाइब्रेट होगी और ऑडिटरी नर्व जो है वो इन वाइब्रेशंस को आपकी ब्रेन तक पहुंचाएगी, जिसकी वजह से आपको सुनने की हियरिंग आएगी, that you are hearing something. So pinna will collect the sound will pass into the auditory canal. From auditory canal it will go to the eardrum. The eardrum will start vibrating. Then the 3 bones which are present in the middle ear, malleus, incus and stapes, they will amplify the sound. Then this sound will pass through into the perilymph. ओके, पेरिलिम्फ से पास होगा वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन में से, वहाँ ये वाइब्रेशंस जो है वो स्केला टिम्पेनाई में पास होंगी. ओके, स्केला टिम्पेनाई, दीज विल पास थ्रू द स्केला टिम्पेनाई एंड देन दे विल पास थ्रू द बेसिलर मेम्ब्रेन. ओके, ना बेसिलर मेम्ब्रेन में जब ये वाइब्रेट होंगी, सो देर आर सेंसरी हेयर सेल्स. Okay, there are sensory hair cells. These hair cells they will press against the टेक्टोरियल membrane. तो ये आपके सेंसरी सेल्स हैं, अगर आप देख सकते हैं दीज आर जो सेंसरी सेल्स. तो जैसे ही वाइब्रेशन होगी ये सेंसरी सेल्स जो है वो आपके टेक्टोरियल मेम्ब्रेन को वाइब्रेट कराएंगे, और जैसे ही टेक्टोरियल मेम्ब्रेन वाइब्रेट होगी, ठीक है, द सेंसरी हेयर सेल्स दे विल गेट एक्साइटेड. सेंसरी हेयर सेल एक्साइट हो जाएंगे, आपका इन्फॉर्मेशन ऑडिटरी नर्व्स तक पहुँचेगा, ऑडिटरी नर्व से वो आपका ब्रेन तक पहुंचेगा एंड देन द ब्रेन विल इंटरप्रेट व्हाट यू आर हियरिंग. सो ब्रेन आपको बताएगा कि आपने क्या सुना है. सो दिस इज एग्जैक्टली हाउ, व्हाट इज द एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, कि हम सुनते कैसे हैं. क्लियर एवरीवन? सो योर ईयर्स दे आर बेसिकली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हियरिंग पर्पज. नाउ कमिंग टू योर नोज. Dear students, what is the function of nose? Can you tell me what is the function of nose? Yes, nose is basically an organ that gives you smell. Okay, because olfactory receptors are present in your nose. ठीक है, आपके नोज में जो है वो olfactory organs present होते हैं. So जब कोई भी स्मेल आपके नोज के थ्रू रिसेप्टर्स तक पहुंचती है, so olfactory epithelium मौजूद है, that will receive the sensation of smell. Suppose if you are smelling a flower, so again the aromatic substances will be present. That aromatic substances, they will enter into your nose and your olfactory organs will get the information. Your olfactory epithelium will get the information. So the neurons of the olfactory epithelium,
they extend from the outside environment directly into a pair of olfactory bulb. तो आपके यहाँ पर olfactory bulb में आपके पास information पहुँच जाती है. And these you can say, आपको याद है limbic system हमारा होता है, limbic system, remember? So we have a limbic area in the brain, and this limbic area has an extensions in the olfactory bulbs. So nose के through जब कोई भी smell आपकी body में जाती है, certain flavors if they are reaching, so their nose hairs, then they will reach to your olfactory bulb, and this olfactory bulb will send the information to your limbic area which is present in your brain, and this is how we get the information that we are smelling something. ठीक है, तो ये आपकी nasal cavity है. Nasal cavity में आपके olfactory organs मौजूद हैं, and then these cells they will send the information to your olfactory bulb. Olfactory bulb will send the information to your limbic area and the present in the brain. So either it can be the certain flavors, the smell of a rose, or the smell of perfume, or something else. So your olfactory epithelium collects the information, passes to the olfactory bulb, and the olfactory bulb will pass information to your limbic area present in the brain. Now tongue, dear students, we know we have a tongue. Tongue is basically your muscular organ. So tongue is basically gives you taste. ये आपको taste बताती है. And why it tells you taste? Because there are certain taste buds which are present on your tongue. आपके tongue पर जो है वो taste buds present होते हैं, and these taste buds they tell you 4 primary tastes, that is sweet, salt, sour and bitter. So ये taste buds जो हैं वो आपको different taste indicate करते हैं, and these taste buds are nothing but they are gustatory receptors plus your supporting cells, and they are present around the base of the taste papilla. तो आपके टंग के ऊपर आपके टेस्ट पैपिला मौजूद हैं, राइट. You have fungiform papilla, you have filiform papilla, and then there is at the base of these you have the taste buds, and these taste buds can be small or large, and they help in detecting the 4 taste, that is your sweet, sour, salt and bitter. Okay, so gustatory receptors are responsible for taste. In nose we have olfactory receptors, on tongue we have gustatory receptors. So your nose and tongue, dear students, they are your chemoreceptors because they are able to detect the dissolved chemicals. So the senses of taste and smell are functionally similar and they are interrelated. तो आपका जो sensation है taste की और smell की, ये basically functionally similar है. Brain integrates different inputs. Brain जो है वो आपके different organs से input लेती है, and there is a complex flavor that is perceived. और इस तरीके से वो complex flavor को initialize करती है. Now last portion of your sense organ is your skin. We know, dear students, skin is the largest sense organ because it covers your complete body, and it contains special receptors for your heat, cold, touch, pain and pressure. तो ये आपके different types of receptors present है आपकी skin में, जो आपको अलग अलग तरीके के reception में help करते हैं. So as you look into your parts of the skin, you know your skin basically consists of an epidermis part, then it has also have sweat glands, there is a layer deposition of layer, sweat pores or sebaceous glands are there. ठीक है, touch receptors, these are your touch receptors as you can see here. So your skin responds to the touch, pressure, cold, heat and pain. Okay, and it collects information, and these receptors they collect the information and send it to your brain portion where there is a reception from the skin part. Now dear students, I hope you have understood the 4 different organs like your tongue, skin, ear, right, and your nose. In the previous module we have spoken about the eyes only. So this finishes your chapter. That is, we have spoken about all the sense organs. So you will make notes of this topic. You will read the page numbers 323, then 325 and 327. Okay, you will read these portions very clearly. Okay,
And then if there is any doubt, anything that you feel that it has to be sorted out, you will communicate with me if in case of your doubt or a query. I'll definitely solve your problem, right? So that's all for today. Bye everyone.